Hello, students. Good evening. Yes, Chitradurga students. Good evening. Davangere students. Good evening. How are you all? How are you all? Let me know. Let me know in the chat. Had your tea? Had everything? Just a second. So yeah, students are joining. Hello. Good evening, sweetie. Good evening. How are you? Yes. So in the meantime, students, as students are joining and YouTube live students, good evening. How are you all? So let's do one thing. I'm good. I'm good. Thank you. So let's do one thing. Let's take a quick technical check. And as the students join, they will answer the technical check. Okay. Okay. So please let me know, is my audio, is my video, is clear? Everything is clear. Video as in the presentation is clear or not through the technical check. Okay. Through the poll. So is the poll, students? Good evening, Ballari students. Please let me know. Yes, everyone has to answer the technical check, okay? So that I can know that okay, there isn't any issue. And I hope students are late today. It's already 6:45. Yesterday I was late. Today you are late. Yes. Okay. Students, okay. So everyone, not everyone has answered, but yeah, I have got 75% of the answers. So I'm ending the poll. Yes. So in the meantime, if you face any technical issues during the class, please let me know in the chat box. Okay, please let me know using the chat box. Okay, is there any exam going on? No, right? The exam was postponed, right, for every JNVs. Harshada, good evening. How are you? Yeah. So good evening, everyone again. So my name is Avanmeet. I'm your physics faculty from Avantifellows, and we were talking about what? Work, energy, and power, right? So we have covered a lot of things regarding work. Today we'll be talking about something very, very important, which will basically make your life much easier. Okay, it will make your life much easier. And over here, the formula that we are going to get for work is very, very important. Okay, I mean, when I say the life of yours will be much easier, I mean the problems. Just a second. Let's say the problem solving will be much easier. Solving will be much easier. Okay, much easier. So I hope all of you have taken your books. Everything is ready. Okay. So in the meantime, let us quickly go through what we are going to study today. Okay. So first thing is quickly recall everything what you studied in the last class. Then we are going to talk about students. See, one thing is what? A quick question too. There'll be a quick question. Yes. Then we are going to talk about something important. That is what, students? Work energy theorem. Work energy theorem. Okay. And based on this work energy theorem, we are going to what? Solve some numericals. Solve numericals. Yes. We are going to solve numericals. And then the summary of today's session. Then it will be the summary of today's session. Okay. Summary. It's good. So these are the things that we are going to do today. And the numericals are very, very important. So make sure that you are solving along with me. Okay. So whoever has joined just now, good evening, Teerth, Davangere students. Yes. Bagalkot students. Suman. Good evening. Good evening. Okay. So yeah. So if that is the case, students, then let us go. Let us quickly recall what we have studied in the last class. Suman, good evening. Yes. So we were talking about what, students? We were talking about non-conservative force. Yes or no? Where we already have seen the example of what? Frictional force. And I told you that in the non-conservative force, what is the condition? The non-conservative force, what? Depends on the path. Yes or no? Path that we take. And also you know that, let's say if there are two paths that are, let's say if there is A and B,
and there are two paths that you take, like path 1 and path 2, and you know that the work done by path 1 is not equal to work done by path 2. Yes or no? Students, let me know. Was these things that we discussed about non-conservative force? Yes or no? And in definition, I said you that in very simple terms, it's what? Any force which is not conservative is a non-conservative force. You can say that, yes. Why? Because it depends on the path over here, non-conservative force, and the work done is not equal. Yes or no? And also we saw that, let's say, if there is a closed path. For a closed path, students, let me know, is the work done, what is the work done for the closed path? If there is a closed path, okay, this is a closed path. You know that for conservative force, for a conservative force, what is the work done? Work done for a closed path for a conservative force. Let me know. Let me know, students. Good evening, Amrita. How are you? Yes, that is work done is 0. Yes, I'm asking for conservative force. Yes, and in non-conservative force, students, always remember, in non-conservative force for a closed path, no Chitradurga students, I didn't have. Why? So for a non-conservative force, for a closed path, the work done is never equal to 0. Always remember this. Okay. So examples are frictional force. Then I told you that air resistance. Yes, air resistance. Achha, I'm hungry now. That was yesterday, right? It was yesterday. I was talking about yesterday, right? Yes. Good. So these were the things that we talked about. Yes or no, students? Yes. And also we talked about numericals yesterday. Acha, dull. Because I have a headache. Okay, I have a headache. So that is why, like, I have taken tablets. So I have little headache. So thoda aisa ho raha hai. ठीक है? And yes, sure. Thank you. And we were talking about numerical. Okay, we were talking about numerical where I told you that, see, if there was a question that said that f is equal to something fx I cap plus fi j cap plus fz k cap, then the question would ask that whether the force is what? Conservative force. Yes, you need to check. You need to check whether it's a conservative force or a non-conservative force. Good evening, Path. Good evening. Or a non-conservative force. Yes. It's okay, Path. No issues. Okay, no issues. Or some other force. Okay, whether it is depending on X or depending on Y. What was the method? You remember? The short trick method was, see, if the force that is given was a conservative force, then we used to get what? What is the method to check? The method was del fx by del y is equal to del fy divided by del x. Yes, this was the first method. The second method was what? Del f. Second criteria. What are the different? These are the criteria. Sorry. Method was, you need to check del fx by del y is equal to del fy by del z. Del f what? Fy divided by del z equal to del fz equal to divided by del what? What would be the variable over here? Let me know. What would be the variable here? Let me know. Jaldi. Yes, very good. That is why. Very nice. And the third criteria was del f. क्या होगा यहाँ? F की वेरिएबल कौन सी होगी? X. हाँ ठीक है, Z भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. del fx by del z is equal to क्या होगा? del f. यहाँ क्या कौन सी वेरिएबल होगा? यहाँ कौन सी वेरिएबल होगा अभी? Yes, very good. Divided by कौन सी वेरिएबल? What will be the variable now? Yes, very good. Yes. So these are the three criteria that has to be satisfied, and these two criteria are satisfied, then the force would be what? What, students? Conservative force. It would be a conservative force. Yes or no, students? Let me know. Yes or no? Yes, very good. Others, let me know.
Okay, yeah. So bear with me, okay? I have a little headache, so I can't deliver my 100%, but I'm trying my best. Okay, is it good? Nice. Okay, nice, nice. If that is the case, students, let us then quickly go through a quick question. It's a very simple question. I want you to answer it. Okay. So, okay. Before going to the question, let us quickly go through another thing that we have talked. That is what difference between the conservative and a non-conservative force. So, what are the differences? The difference was the work done is equal over here. The work done is not equal over here. Yes or no? And also for closed path, the work done is zero. We saw that. And here the work done is not equal to zero. And you know that the force is independent of the path. It doesn't depend on the path, right? The सामने आइसक्रीम पार्लर की एक एग्जांपल लिया था, and over here it is depending on the force. Yes or no? Depending, it depends on the path. Yes or no? देखो, ये एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, ठीक है? मान लो आपको स्कूल जाना है, ठीक है? स्कूल स्कूल जाने के लिए बहुत रास्ता है, ठीक है? मतलब 3 रास्ते हैं। मान लो आपके पास एक स्कूल है और आपको जाने के लिए रास्ता है, ठीक है? सही है? ये रास्ता है, ये आपके घर है। वही बात है ना, देखो, अगर आपने अभी लेट हो रहे हो, तो आपको वही वही बात है ना कि अभी लेट हो रहे हो, अगर आप लेट हो, तो आप किस रास्ते पे जा रहे हो वो तो डिपेंड करेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब इस रास्ते से जा रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे, या इस रास्ते से या इस रास्ते से, है कि नहीं? सो इट डिपेंड्स ऑन दी पाथ, यस और नो, है कि नहीं? सो वही ऐसा ऐसा सोच सकते हो, ठीक है? आई मीन फॉर योर रिमेम्बरेंस, ओके? अगर आप ऐसा कुछ रिमेम्बर करना चाहते हो तो ऐसा एक एग्जांपल लो कि आप रिलेट कर सकते हो। यस, एंड आल्सो सो वी सॉ द व्हाट एग्जांपल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर कौन सी फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड टेंशन। ठीक है, ये सब सही है यहाँ तक? ऑल सेट? लेट मी नो। अभी तक जो हमने बात किया है उसमें कुछ डाउट है? यस, वेरी गुड। अदर्स लेट मी नो। वेरी नाइस। Okay, good. Madiha, let me know. Davangere students, let me know. Ballari, Bagalkot. Yes. Okay, good. Very good. Very nice. Yes. Yep. If that is the case, students, then here is a quick question for you guys. It's very simple. Here it is asking a particle moves along x-axis and it is moving from 0 to 5 meter. What? Under the action of the force given by F is equal to 7 minus 2x plus 3x square. Find the work done in the process. Students, please let me know what is the work done in the process. ये बहुत simple है. I'm giving you 2 minutes of time. बहुत simple है. Please solve this, students. Please solve this. Amrita, please solve the question. Yeah, and whoever joining in the YouTube live, let me know if you have any doubt through the chat box. Okay. What is the answer? What is the work done that you get? Okay, Path, good. Chitradurga students, check your answer. Others try to solve this. Okay, very good, Chitradurga students. Both the sections. Okay, now we have written the right answer. Others, can I know? Madhya, check your answer. आपने कुछ इंटीग्रेशन में गलत किया होगा. स्वीटी, आप भी चेक करो एक बार.
Okay, last 10 seconds. Last 10 seconds. Okay, good. The time is up, but our students, very good. Now, how to solve this? See, you know that for a variable force, there is this what इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर है कि नहीं. लेकिन अभी जो हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है ना, वो कौन से एक्सिस पे हो रहा है? एक्स एक्सिस पे ही हो रहा है ना, एक्स एक्सिस पे. सो कैन आई टेक द वर्क डन टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, ऐसे ले सकता हूँ, है कि नहीं. नाउ यू नो दैट ओवर हियर द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 5, सो 0 to 5 ले लो. नाउ वर्क डन इज इक्वल टू 0 to 5 एंड एफ क्या है? 7 - 2x प्लस 3x² इंटू डी एक्स. अभी इसका इंटीग्रेशन करो. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? लेट मी नो. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? देखो पहले 0 to 5 7 का होगा, माइनस 0 to 5 2x का भी होगा, प्लस 0 to 5 3x का भी होगा. और यू नो दैट वर्क डन ऑफ लाइक इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 7 का 7x 0 to 5 है कि नहीं, माइनस इसका 2x² 0 to 5 प्लस व्हाट 3x³ 0 to 5. सही है? यहां तक सही है? सब सही है? नाउ ओके, जस्ट अ सेकेंड. नाउ यू नो दैट, देखो ये क्या था? वर्क डन क्या था? 7x, यस 7x 0 to 5 माइनस जस्ट अ सेकेंड, माइनस क्या था? 2x², तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x² 0 to 5 प्लस 3x 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर x³ बचेगा, x³ 0 to 5 है कि नहीं. अब देखो, अब मैं 5 डालूंगी इसके अंदर, है कि नहीं. ऐसा नो स्टूडेंट्स, 7 लाइक 5 और 0 को कोई मतलब नहीं है, तो 0 हम वी वोंट कंसिडर 0 ओवर हियर. तो 7 into 5 माइनस 5² प्लस 5³ कितना हो जाएगा? 7 5 35 है कि नहीं, माइनस 25 प्लस 5³ कितना हो जाएगा? लेट मी नो स्टूडेंट्स, 5³ व्हाट इज 5³? व्हाट इज 5³? लेट मी नो. अच्छा 125 पक्का ना? 125. यहाँ देखो 125 से 25 कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा? अगर ये माइनस करोगे तो 100 हो जाएगा. यस, पक्का पक्का. अच्छा. So work done is equal to 135 joules, students. This was the answer. Got it? So whoever has given this as the answer, very good. Okay, very good, very good students. So yeah, students who have made mistakes, Chittadurga students. Okay, very good. Okay, others, Tweety, Madhya. Acha, okay, Path. Okay, nice. Okay, is it clear, students? Let me know. Okay, good, good. Others, let me know. Let me know in the chat. Let me know in the chat. Yes, very good. Problem सही है ना सब कुछ?
Okay. Okay, students. Sorry, there was a network issue. Students, can you tell me whether you are able to hear me or not? Let me know, students. Is there any okay, there is any delay or any network issues? Yes, sweetie, let me know. Let me know your doubt. No, is my audio clear or not? So inconvenience because the sun power cut. Okay, there is it's showing that there is some issue. There was a sudden power cut. Okay. Yes, sweetie, let me know. Okay, Arshada. Good students, please let me know now whether you are able to hear me or not. Okay, not able to hear me. Yes, please let me know. Yes, Harsha, just a second. Let me the audio issue. Is my audio clear now? Let me know. Sweetie, I'll clear your doubt too, okay? Let me just set up the audio. Is my audio clear now? Students, let me know. Everyone. Okay, good. Okay. Yes, thank you. Now, Harshad, you were asking this slide, right? Okay. Sweetie, always remember that integration of, let's say, a constant, अगर आप integration कर रहे हो, कोई भी constant रहे, ठीक, integration of 7, integration of 5 और integration of 5 dx ऐसे कर रहे हो, ठीक है? आपका जो आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा क्या? Integration of 7x और 5 कर रहे हो तो integration of 5x आ जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करते हो. क्लियर? इज इट क्लियर? सो इसका मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx इज व्हाट? बेसिकली आपका आंसर कांस्टेंट इनटू x dx x आ जाएगा, ठीक है? कांस्टेंट इनटू x आ जाएगा. जस्ट अ सेकेंड. मतलब इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू x, सॉरी, कांस्टेंट टू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट इनटू x. ठीक है स्वीटी? ओके, good. Now students, we are going to talk about what? We are going to talk about work energy theorem. So what is this work energy theorem? And in order to understand work energy theorem, you need to understand, as I said yesterday, you need to understand what is kinetic energy. ये kinetic energy क्या है? बता सकते हो कोई? या कब आता है? ये kinetic energy कब आता है? कोई बता सकता है? Let me know. Yes, very good. So whenever the object, whenever the object is in motion, then क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, है कि नहीं? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं? यस, ओके. Chitraduga students, we'll see that, okay? We'll see that. So this is the formula of what? Kinetic energy, where m is the mass of the object and v is the velocity of the object. है कि नहीं? ये सब हमें पता है ना? ये सब क्लियर है ना हमें? इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? है कि नहीं? अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कल. I asked a question with you guys that whether kinetic energy depends on the frame of reference, so इसका आंसर क्या है? Whether it does depend or whether it doesn't depend. Okay, others
Chitraduga students are saying yes. Okay, there is, I'll do S. No, इसमें एक है, ठीक है, +1 एक और हो गया, कोई और है? Whether it's no or yes, let me know in the chat. क्या हो जाएगा? Parth, let me know. Sweetie Teerth, yes, okay. Harshada, very good. Davangere students, Ballari students, Bagalkot students, let me know in the chat. Madhiya, okay. सब SC बोल रहे, ठीक है, SC बोल रहे, okay. Now let us see how that is possible. Now let us take a car, ठीक है, एक कार है या कुछ कार है, ठीक है, इस कार है, ये मेरा छोटा सा कार है, ठीक है. Don't judge my drawing, ठीक है, मेरा ड्राइंग पे जज मत करना, ठीक है. इसमें दो बैठे, ठीक है, 2 people are sitting in this car. Now here the object is moving with the velocity v, ठीक है, and over here there is another person, okay, let this person be a, then let this person be b, and let this person be c. अब मुझे बताओ कि जो अगर इस पर्सन के लिए if the mass of the a object is m, what will be the velocity of a for c? ये बताओ, what will be the velocity of a for c? Or let's say what will be the kinetic energy? What will be the kinetic energy of a for c? Can I say for kinetic energy for a of a for c is क्या? Kinetic energy is equal to half mv square, ठीक है. v square क्या है? Basically जो velocity with which the car is moving, है कि नहीं? Yes, let's say velocity of the car, और let's say एक velocity से जा रहा है कि नहीं? Now students, you know that here there is object b also. Now b and a are sitting together. है कि नहीं? मुझे ये बताओ, अगर मैंने अभी पूछा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए with respect to b, तो क्या हो जाएगा? let me know students. अगर मैं देखो, पहले मैंने क्या बोला, सी देख रहा है, ठीक है, सी देख रहा है, तो मैंने पूछा कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, कौन सा? ए का वेलोसिटी. तो आपको पता चला कि सिंस कार इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा. हाँ, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ कि b एंड ए आर सिटिंग इन द सेम कार, है कि नहीं? b एंड ए आर सिटिंग इन द सेम कार. अब मुझे ये बताओ कि ए का अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी देख रहा है इसको, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? वेरी गुड. अदर्स लेट मी नो इन द चैट. Students, let me know what happened. 0. Very good. Why? See, over here the kinetic energy comes out to be 0, है कि नहीं? क्योंकि B को A क्या रेस्ट पे है, B को A रेस्ट पे है. इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो तो 0 है. अगर हमने हाफ mv स्क्वायर किया तो B तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर कि काइनेटिक एनर्जी depends on what? The frame of reference. Depends on the frame of reference. ठीक है? Is it good? Students who are joining from YouTube, is it clear? Okay, Suman. See. Now, Suman, let us take 2 people. Okay, let us take 3 people. यस, ठीक है. यहाँ एक पर्सन बी है, यहाँ एक पर्सन ए है, ठीक है. नाउ द सी इज द थर्ड पर्सन हु इज ऑन अ बेसमेंट, ठीक है, एक ग्राउंड पे है, वो अभी देख रहा है ए को, ठीक है, उसके मास m है, ठीक है, उसके मास m है. अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, ठीक है, फॉर सी के लिए, मतलब सी अभी देख रहा है, मतलब मैं अभी जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, मैं अभी देख रहा हूं ए को, ठीक है. अभी ए कार पे जा रहा है, ठीक है, कार, ही इज मूविंग इन अ कार, और मैं देख रहा हूं, अच्छा ठीक है, वो मूव कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो उस टाइम आपको पता है कि एक वेलोसिटी से जा रहा है ना, कौन सी? ए. क्योंकि वो कार पे ट्रैवल कर रहा है कि नहीं? वो कार पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसका एक वेलोसिटी होगा.
ठीक है, उसका वेलोसिटी अभी हम लेते हैं कार का, क्योंकि वो कार में जा रहा है। यस, सो द काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ mv स्क्वायर। सही है। अब देखो मैं सी, अभी आई वोंट बी सी, आई विल बी बी नाउ। ठीक है, अभी मैं बी हूं और मैं कौन सी ए के साथ बैठा हूं। अगर मान लो मैं कार पे हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अगर मान लो अभी मैं कार पे हूं, ठीक है, बाजू में बी बैठा, ए बैठा, ठीक है, हम कार पे जा रहे हैं। मुझे ये बताओ ए, हाउ विल ए लुक फॉर मी, वेदर ही और ही इज एट रेस्ट, कैसे दिखेगा? सुमन लेट मी नो, कैसे दिखेगा वो? ठीक है, मैं कार पे जा रहा हूँ, कोई बैठा है, कैसे दिखेगा? सुमन लेट मी नो। हाँ, तो रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इसका वेलोसिटी है वो तो जीरो है। तो अगर मैं ये बोलूं अभी विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में ए को देखूं, तो बी तो जीरो है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा ना। यस और नो? सही है, पता चला अभी? यस, हाँ, बस इतना ही था। यस, गुड गुड गुड। जस्ट अ सेकेंड, आई चेंज माय, so due to this network issues and all, we have to just change everything. Okay, okay, very good. But we see, no 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 no, wait, what are you talking? But we see, no, see here I'm not, see, that is what I'm asking now. I'm asking kinetic energy of A. Did I ask kinetic energy of C? No, right? Did I ask kinetic energy of C? Kinetic energy of A I'm talking about. Only one body I'm talking about. Is it good? So that body has zero, right? So that is what I meant. Like if you are outside, then for you, what A is there will be some kinetic energy, but you are inside. See over here, this is a different frame, right? This is one frame. This is frame one, which is outside, and this is frame two, which is inside. So there are two frame form references. Okay. Yes, very good. Is it clear? Let me know, students. Sweetie, Teerth, is it clear? Yes, very good. Now, if that is the case, students, then let us come to work energy theorem. What does this work energy theorem says? Basically, see, there are what? See, you know that for a body of mass m, there will be how many forces? One is what? There will be internal force. एक internal force भी हो सकता है, एक external force भी हो सकता है, एक conservative force भी हो सकता है कि नहीं? एक conservative force भी हो सकता है और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है कि नहीं? सो दीज आर द फोर्सेस दैट कैन बी व्हाट अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली से दैट द वर्क डन बाय ऑल दीज फोर्सेस. ये कौन सा है? ये जो फोर्सेस है ना उसके बॉडी में, बाय ऑल द फोर्सेस, okay, is equal to क्या है? क्या बोल रहा है? the work done by all the forces equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy of the body. बस क्या हो रहा है कि the work done by all the forces is equal to the change in kinetic energy of the body. पता चला? अरे एक मिनट रुको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. मैंने अभी आपके घर पे आया और आपको, आप सो रहे हो और आपको बताया कि उठो, ये आपको ये बताओ कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है. ठीक है, आपको बताना पड़ेगा. ठीक है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, you will be able to solve questions much easier. ठीक है, questions easily. ठीक है, so please make sure that you understand this. अब पता चला? Is it good? So this is what see what students, the change in kinetic, the work energy theorem says, and you know that if work done is positive, क्या होगा? मैंने बताया कि velocity ज्यादा होगा,
वेलोसिटी विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा ना, पता चला। देखो अगर मान लो एक बॉडी रेस्ट पे है, मैंने उसको मारा तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव, मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है उसका। एक बॉडी था, मैंने किक किया, पर रेस्ट पे था, किक किया, वेलोसिटी ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। यस, सिमिलरली मैंने अगर वर्क डन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या, देखो एक बॉडी मूव कर रहा है, मैं उसको रोकना चाहता हूँ तो उसको एनर्जी में घटा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजिंग। यस, वेरी गुड। सो वही है, सो इंक्रीजिंग होगा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर वर्क डन नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा। मींस काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं। यस, यू कांट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज एम वी स्क्वायर है, ठीक है। वर्क डन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी कुछ ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो गया। मैंने ये बोला बोला नहीं है कि वेलोसिटी अगर, मान लो इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 5 मीटर पर सेकंड, वर्क डन 5 मीटर पर सेकंड 5 जूल्स ज्यादा होगा, मैंने ये कभी नहीं बोला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोपोर्शनल बोल सकते हो कि अगर मतलब एक प्रोपोर्शन के साथ ज्यादा होगा। अगर ये वी स्क्वायर से ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। यस, इज इट गुड। यू कांट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्योंकि वी स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर है कि नहीं। इज इट गुड, सुमन पता चला अभी। यस, अदर्स, ओके सुमन, नो प्रॉब्लम। यस, नाउ अगर हमने ये देखा, ठीक है, अब देखो, अब डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, the sum of work done by all forces, that is conservative, non-conservative, internal, external, जो भी forces होगा, ठीक है, acting on each particle of a system of particles, मतलब एक बॉडी के ऊपर, is equal to the sum of change in kinetic energy, जो मैंने वही बोला, ठीक है, change in kinetic energy of each particle of the system. This is what we call work energy theorem, which signifies the work as energy transfer. बस, तो अब पता चला ना, अगर मैंने कुछ बोला, इफ आई डू सम वर्क और वर्क ऑन अ बॉडी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बताओ बताओ बताओ, क्या एनर्जी ट्रांसफर, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगा, है कि नहीं। यस, तो अब पता चला ना कि वर्क और एनर्जी के बीच में क्या है रिलेशन, अब पता चला, इस रिलेशन से आया, वर्क एनर्जी थ्योरम से आया। इज इट गुड, लेट मी नो। देखो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला, टोटल वर्क ऑफ टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। अभी हमें इसका इसका प्रूफ लेकर आना है। देखो फिजिक्स में ऐसा है कि ऐसा कुछ भी आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया, वो फर्क नहीं पड़ता, हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ, व्हाट इज इट, हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, बता सकते हो कोई, कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन वी डू द प्रूफ, ठीक है, लेट मी नो हाउ कैन वी डू द प्रूफ। देखो बेसिकली इट इज सेइंग दैट वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं फिर से लिखूंगा, क्या बोल रहा है कि वर्क डन बाय कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है, हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये आपका फॉर्मूला है। एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, व्हाट, small change in work done, small work done by all forces, small work done by all forces is equal to small what, change in kinetic energy,
Is it good? Small change in kinetic energy. Yes. Is it good? Okay, Chittadurga students, let me know how can we solve this? Conversion theorem. Okay, someone is saying conversion theorem by equation of motion. Chittadurga students are saying v square minus u square is equal to 2as. Sorry, Chittadurga students, why are you asking sorry? So please remember these two. ठीक है? ये एक डिफरेंशियल फॉर्म है. ये क्या? Conservation. अच्छा, conservation. Okay, okay, okay. Yes. Yes, yes. Very good, very good. Students, is it clear now? Now talking about the proof of conservation theorem. Sorry, work energy theorem. ठीक है? क्या है work energy theorem? Work done by all forces. All forces. हमें क्या प्रूव करना है? Kinetic energy in final minus kinetic energy initial. ये हमें प्रूव करना है. ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, देखो हम let's assume जो हमारा फोर्स है वो वेरिएबल है. ठीक है, जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स है. तो कैन आई राइट स्टूडेंट्स वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx. ये लिख सकता हूं, ये क्या नहीं लिख सकता हूं? लेट मी नो. एंड यू नो दैट अगर मैंने बोल दिया कि x1 से x2 चेंज हो रहा है तो ये लिख सकता हूं. इधन बड़ी बोधा work done from x1 to x2. Yes, very good. Now if that is sweetie, let me know. Everyone has to answer. Okay, Teerth, Yadgiri students, let me know. Ballari, Bagalkot, Harshada, Suman, let me know. ये बहुत important theorem है. Yes, very good. Now you know that f is equal to m into a. ये सही है, ये सब सही है. मैं यहाँ पुट करूंगा. ठीक है, one what substitute 2 in 1. ठीक है, I'll substitute 2 in 1. तो क्या हो जाएगा? Work done is equal to integration of x1 x2 m into a into dx. सही है, यहाँ तक सही है. Now students, you know that acceleration क्या है? What is acceleration? Change in velocity. है कि नहीं? अब I'll do something. Okay, what will I do is I'll multiply by dx by dx. So what? Multiply a with dx by dx. इसको multiply करूंगा. So can I write a is equal to dv by dt into dx by dt? लिख सकता हूं ऐसे? मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अभी ये क्या है? What is this? What is this students? What is dx? What is dx by dt? ये क्या है? What is dx by dt? Let me know. dx by dt क्या होता है बेसिकली? वेलोसिटी होगा ना? वेरी गुड. वेलोसिटी, वेरी गुड. दैट इज v. Yes or no? So can I write acceleration to be v into dv by dx? लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं. Now this is the third equation that you got. Yes. Now students, let's do one thing. Let us substitute third in what? This star. Okay. Now what will you do is next substitute 3 in star. So अगर मैंने substitute किया तो क्या हो जाएगा? Will I get w equal to integration of x1 x2 m into v into dv by dx into dx. है कि नहीं? dx cancel हो जाएगा. Work done is equal to integration of x1 x2. और अब देखो, अब कुछ हो गया याद है. Okay. Now students, over here integration of m into v into dv हो जाएगा. है कि नहीं? Let me know students. ऐसे चेंज हो गया ना. अब मुझे ये बताओ, कैन आई राइट द लिमिट? जो भी लिमिट हम लिख रहे हैं ना, उसको x1 और x2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि अभी dv में कन्वर्ट हो गया. है कि नहीं? लेट मी नो. इफ dv में कन्वर्ट हो गया ना, तो हमें जो लिमिट है ना, उसको हम व्हाट v1 से v2 लिखना पड़ेगा. यस, एंड दिस इज व्हाट यू गेट ओवर हियर. नाउ व्हाट यू डू, यू नो दैट मास इज कांस्टेंट. तो मास कांस्टेंट है, तो वर्क डन इज इक्वल टू मास को बाहर निकाला मैंने. इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? v1 to v2. व्हाट विल आई गेट? v into dv. है कि नहीं?
अब मुझे ये बताओ, इसका मैंने इंटीग्रेशन फिर से करूंगा तो क्या हो जाएगा, विल आई गेट W इक्वल टू M इंटू वी स्क्वायर V1 टू V2, ये मिल जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स कैन आई राइट W इक्वल टू M इंटू व्हाट विल आई गेट, स्टूडेंट्स लेट मी नो. Oh, V square by 2, sorry, V square by 2. Yes, will I get V2 square by 2 minus V1 square by 2? है कि नहीं? And will I get, students, W equal to what? Half MV2 square minus half MV1 square. ये मिल जाएगा कि नहीं बताओ. ये क्या है? Work done by all forces, by all force. Let me know, students, is it clear till now? यहां तक मिल गया हमें, ये सही है. So now I got to know that you know what, you know kinetic energy is equal to what, half mv square. So मैं यहाँ put कर सकता हूँ इसको. So will I get now here, will I get what work done is equal to kinetic energy जो second position पे है minus kinetic energy at first. So इसका मतलब क्या है, जो work done हो रहा है ना, जो वर्क डन हो रहा है, कैन आई राइट, जो वर्क डन हो रहा है, कैन आई राइट वर्क डन टू बी व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एंड द वर्क डन इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब पता चला व्हाट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. अब समझ में आया प्रूफ कैसे चल रहा है. Let me know, students. Let me know. ये देखो, ये पहला, okay, just a second. ये देखो, ये पहला स्टेप है. I'll write the step. पहला स्टेप है, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, फिर क्या है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, ये टेंथ है, ये 11th, and this is your 12th. And from here you get 12th, 13th, and the final result. Let me know, students, is it clear? Everyone in the chat, let me know, students. Chittadurga students, Davangere students, let me know. Yes, very good. Others, yes. Direction पता चला ना. अगर अभी किसी ने आपको एग्जाम में पूछा, so what will you do? You'll just derive this. This is very simple. The only thing you need to take care of is what? See, over here there is change in limit. There is this what? Remember that there is change in limit here. Change in limit. कहाँ से? X से V हो जाएगा ना? Yes, very good. Change in limit. Very good. Yes. So if that is the case, students, we'll be what? Solving numericals. Okay, we'll be solving numericals based on it. आपको मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसा होगा वर्क डन मतलब कैसे सॉल्व करता है, कैसे इजी हो जाता है. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ इफ दैट इज द केस, स्टूडेंट्स, लेट अस डू अ न्यूमेरिकल. उससे पहले आई डू वन थिंग, आई लॉन्च द एनपीएस पोल. ओके, आई लॉन्च द एनपीएस पोल बिकॉज द थिंग इज एनपीएस पोल मतलब if I'm let's say if I want to what do you say, enable the NPS poll, you'll be leaving the class. Okay, so I'm launching the NPS poll, and with the answer of NPS poll, we'll solve this numerical. So I have launched the NPS poll. So please answer the NPS poll now. Very good. Now, if that is the case, students, let's do one thing. Let us try to solve this problem. What is this problem? Just a second. Okay. Now, here says a body of mass 2 kg is acted upon by a force such that what velocity time graph? What is this? Velocity time graph is as shown. Find the work done by the force. ये देखो, आपको बोला है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. ठीक है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. उसमें उन्होंने ये दिया है कि ये है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ. रुको, ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, वो मीटर पर सेकेंड है, एंड ये है टाइम, सेकेंड्स में है. और ये दिया है, इसका वैल्यू 10 दिया है और इसका 2 सेकेंड्स दिया है. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हियर अब ये बताओ, इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है, अब बॉडी ऑफ मास एम दिया है 2 kg, है कि नहीं?
एंड एक्टेड अपॉन अ फोर्स, ठीक है, इस बॉडी को एक फोर्स लगाया, ठीक है, एक फोर्स लगाया, ठीक है, एंड इट इज शोन दैट इन वीटी ग्राफ इज एज शोन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। देखो पहले हम क्या करते थे, आपको जो वर्क डन दिया था वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, है कि नहीं? लेट मी नो स्टूडेंट्स, अभी मुझे ये बताओ यहाँ फोर्स दिया है क्या? हैव दे गिवन फोर्स ओवर हियर? फोर्स को दिया है क्या उन्होंने? फोर्स का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, बताओ मुझे। नो, यस, that is where your work done work energy theorem comes into picture. अब पता चला, whenever there is no force and you want to calculate what work done, क्या, whenever, remember this, or if you want to write it down, whenever there is no force given in the question and you have to find the work done, what will you do? You will apply work energy theorem. Got it? Is it clear? Is it clear students? Now अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब ये देखो ये बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। अभी आपको पता है कि जो वर्क डन है वो ये एक फॉर्मूला है, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो कैन आई राइट वर्क डन टू बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? सो व्हाट इज दिस? वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये सही है, very good Chitraduga students. So can I write this as work done is equal to half mv what final square minus half m what v initial square। अब देखो स्टूडेंट्स, इन्होंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि ये जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये क्या है, व्हाट इज दिस वैल्यू, 2 सेकेंड्स है। मुझे ये बताओ जब t इक्वल टू 0 होगा वेलोसिटी क्या होगा? मतलब t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल पोजीशन है ना, तो वेलोसिटी इनिशियल क्या होगा? ये जो वेलोसिटी आ रहा है ये इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? ये सही है। एंड ऑल्सो दे हैव टोल्ड दैट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब क्या, फाइनल है ना वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है? व्हाट इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी? यस अदर्स लेट मी नो, 0 है ना? इज इट 0? देखो यहाँ जब t को 0 है, मतलब ये एक्सिस कौन सा है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। तो अगर यहाँ मैंने 0 रखा तो क्या है, ये वेलोसिटी आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये 10 है। और अभी देखो ये क्या है, ये t है बेसिकली, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 0 आ रहा है। तो कैन आई राइट स्टूडेंट्स दिस एज हाफ m, ठीक है, m क्या दिया इन्होंने, m को 2 दिया है, m को इन्होंने 2 दिया है, इंटू 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस हाफ 2 इंटू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, 10 स्क्वायर, है कि नहीं? सो दिस विल बी 0 माइनस क्यू, 0 इंटू 0 0, हाँ वेरी गुड, हाफ कैंसिल हो जाएगा, 10 स्क्वायर इज 100 एंड यू गेट वर्क डन टू बी minus 100 joules. Yes or no students, let me know in the chat. And everyone answered the NPS. There are 3 students who haven't answered the NPS, so please answer the NPS. Yes students, please let me know, is it clear or not? Yes, देखो अब इसमें एक thing है, ठीक है, the thing is what, why the work done is coming negative? work done क्यों negative आ रहा है? Can anyone tell me? जब वर्क डन माइनस क्यों आ रहा है? लेट मी नो वर्क डन माइनस क्यों आ रहा है? यस वेरी गुड, ना चित्रदुर्गा स्टूडेंट्स, not the displacement is 0, it's not because of that, you know that, yes very good students, here you know that velocity is decreasing। मैंने क्या बोला, अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो क्या बोला मैंने, कि वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा ना। अरे सब कुछ कनेक्टेड है कि नहीं? सो नो, आई टोल्ड यू दैट व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, क्यों, देखो वेलोसिटी इनिशियल में कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, जाते जाते फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है,
तो मैंने बोला वेलोसिटी अगर वर्क डन नेगेटिव है तो वर्क डन क्या वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। अभी हमें हमें उल्टा जाना पड़ा, हमें वर्क डन 0 माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। इज इट गुड? तो ये जेई में पूछ सकता है, ठीक है, JEE नीट एंड ऑल, दे माइट आस्क कि let me know, I mean, calculate the work done and whether the work done is decreasing or increasing or a positive, whatever the value is. Okay, is it good? Let me know, students. And everyone answer the NPS. Let me know in the chat. Is it clear, students? Is it clear or not? Yes, very good. Okay, nice. Okay, good. If that is the case, students, anyways, we don't have much time. Let's do one thing. I'll be giving a homework question for you guys. Okay, I'll be giving a homework question for you guys. You know, you have to solve this. Now the question says. The question says. Let me write the question. Okay, let me write the question. A body of mass 1 kg, a body of mass 1 kg is acted by some forces, ठीक है, such that its displacement is given by क्या दिया, s is equal to 2t square minus 2t plus 10, ठीक है, ये दिया। Now they are asking find the work done by all forces and जो दिया है टाइम दिया है from 0 to 2 seconds, from of time 0 to 2 seconds, ठीक है, ये आपको दिया। find the work done by all forces in the time 0 to 2 seconds. Is it clear, students? Please let me know in the chat. Is the question clear? Let me know in the chat. Okay, good, very good. So students, okay, sweetie, I won't tell the answer. Okay, I'll tell the answer in the later in tomorrow's class. I'll be solving in Monday's class. Okay, is it good? Because अगर मैंने आंसर दिया ना, तुम लोग क्या करोगे? हाँ, you being very smart, what you will do? You will like try to compare the answer. हाँ, मैंने ये किया तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? I'll solve this. Yes. So also 3 students haven't answered the question. Okay. Yes, very good, Chitraduga students. So I'm ending the NPS poll also. So students, please answer the NPS poll. I'll give you one more minute to answer it. So that's all for today, students. Before ending the session, let us quickly go through the summary of today's session. Okay, what and all we have talked today. So initially we were talking about non-conservative force, quick recall. We recalled everything. Okay, we recalled everything, and then we saw that work energy theorem. Yes or no? The work energy theorem. Yes or no, students? So what does the work energy theorem says? Can anyone tell? What does the work energy theorem say? It says that the work done by all forces is equal to क्या है? Students, let me know in the chat. Is equal to क्या है? Yes. What? Change in kinetic energy. Yes or no? And also we saw the proof of it. Yes or no? No, students, Ballari students. Sorry, that is not the answer. And we saw the proof of it. And also we saw what? Numericals. We saw the numericals. Yes. So that's all for today, students. No, Chitraduga students, that's not the right answer. Thank you for attending today's class, students. I'm ending the NPS poll.
And if you have any doubt, feel to contact me anytime. Okay. YouTube Live students, thank you for attending. Take care. Have a nice weekend. Enjoy your weekend. Yes. And also